Hello, friends. Let us see this minor act of very important for the ladies who are facing domestic violence. तो डीवी एक्ट जो महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हम देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है और रिसेंटली जो जजमेंट आया है 2022 वाला, जिसमें लिमिटेशन के बारे में हमारा जो है बताया गया है। तो विल गो फॉर दिस. This is important section, and for judgments we are going to look in this short video. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, Act of number of 43 of 2005, and came into existence 13 September 2005. This act provides for more effective protection for the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence of any kind of occurring within the family and for matters connected with or the incidental thereto, be it enacted by Parliament in the 56th year of Republic. So it's very important to give relief to the victims of violence rather than giving punishment to the whoever is committing these kind of acts. So ये जो act है, it is mostly for the remedies for the women who are facing domestic violence. So particularly, we can just look into this act from that point of view only. So section 4, we'll just talk about the little bit about the limitation period giving under CRPC of section 468, which envisages the period of limitation for taking cognizance of various offenses based on the nature. So it is, if it is considered as a criminal act, then it will be coming under CRPC under section 468 and specifies 1 year of the offenses pertaining to domestic violence. So इसके कारण बहुत सारे offenses जो आते थे domestic violence के अंदर, वो रजिस्टर नहीं कर पाते थे सेक्शन 12 के अंदर, जो limitation period because of this section 468 of CRPC is hitting. And the section 468 of CRPC just will see when the imprisonment of the for the offense does not exceed 1 year and the period of limitation is 1 year, when the minimum sentence for the offense is 1 year and the maximum is 3 years, when the period of limitation will be 3 years. So because of this, the landmark judgment will just see, and before that we'll just look into what kind of act and what it is giving for the women. So it's very important. Protection of the Women from Domestic Violence Act 2005. The act ensures women's right to reside in her matrimonial home. So right to shared residence. तो जो महिलाएं हैं डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है, they are ensuring, the act is ensuring women's right to reside in her matrimonial home. This act has a special feature of specific provision under the law, which provides protection to a woman live in the violence-free home. So it is giving remedy. Though this act has a civil and criminal provision, a woman victim can get immediate civil remedies within 60 days. So a quick relief for the woman. An aggrieved woman can file cases under this act against any male adult perpetrator. So this act is specially for women, and no male can register any domestic violence in this. Who is a domestic relationship with her? Adult member जो वायलेंस करते हैं लेडीज महिलाओं के साथ, जो घर में रहती है शेयर्ड हाउस होल्ड में, they they can also include the other relatives of the husband and male partner as respondents to seek the remedies under this act. So silent features are given. I'll just quickly go through. Ensures right to residence under section 17. Ensure economic relief by recognizing economic violence. तो इकोनॉमिक वायलेंस क्या हो सकता है? जैसे पैसा न देना, और महिलाओं का स्त्रीधन जो होता है वो बेच देना या गिरवी रखना. So that kind of offense also come into this economic offense.
रिकॉग्निजेस वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस, गालियां देना और फिर बार बार उसका अपमानजनक, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई सिखाया नहीं क्या, ये भी एक इमोशनल वायलेंस है, वर्बल एंड इमोशनल वायलेंस। दिस एक्ट प्रोवाइड्स टेम्पररी कस्टडी ऑफ चाइल्ड। तो वेदर जो महिला है वो जो अपने बच्चों को रखना चाहती है अपने साथ, whether she is capable to economically, I'm just mentioning here, इकोनॉमिक कैपेसिटी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टेम्पररी कस्टडी मिल सकती है महिलाओं को जो अर्निंग नहीं करती लेकिन बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है, तो ये एक्ट उसे कस्टडी दिलाता है। जजमेंट विद इन 60 days ऑफ फाइलिंग द केस, सो क्विक, विद इन 2 months, 60 days or 2 months. Multiple judgments in a single case. Cases can be filed under PWDV Act, even if other cases are pending between the parties. So, both the petitioner and respondent can prefer appeal. So, right to appeal है. The following are remedies available under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. जैसा कि सेक्शन 17 का हमने अभी भी देखा है, राइट टू रेसिडेंट शेयर्ड हाउस होल्ड, जो पति का भी हो सकता है या इन लॉज का भी हो सकता है। सेक्शन 18 दे रहा है प्रोटेक्शन ऑर्डर फ्रॉम वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। सेक्शन 19 रेसिडेंस ऑर्डर फॉर रिसाइनिंग एट मैट्रिमोनियल हाउस। सेक्शन 20 मॉनिटरी ऑर्डर्स विच इंक्लूड्स मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। Section 21 is giving temporary custody of children, and Section 22 compensation order for damages caused to her. So, very important remedies in this are given to woman who is facing domestic violence, but provided they have to establish डोमेस्टिक वायलेंस, जिनके साथ वायलेंस हुआ है उन्हें ही ये सब रेमेडीज मिल सकती है। Courts can entertain applications filed under Section 12 of the Protection of Women from Domestic Act 2005, even if it surpasses, very important, the limitation period prescribed under Section 468, जैसे हमने ऊपर देखा हमने जिसमें 468 बता रहे हैं लिमिटेशन पीरियड। Held the Supreme Court in his judgment in Kamachi versus Lakshmi Narayanan on April 13, 2022. तो लिमिटेशन पीरियड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। So Section 2E of DV Act defines domestic incident report, DIR, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, which is a report made in prescribed form. Form 1 में ये करते हैं on receipt of complaint of domestic violence from aggrieved person. Aggrieved person महिला ही होगी। ये एक्ट खास कर उनके लिए ही बनाया गया है। The purpose of this report is to give a glimpse of incident of domestic violence with aggrieved in precise and unbiased manner. ये बहुत ही important है। In good faith उनको ये रिपोर्ट देनी होती है। The steps in domestic violence case. Upon receipt of complaint of domestic violence, the protection officer or service provider has to prepare DIR, domestic incident report, जैसा हमने ऊपर देखा in Form 1 as provided in Domestic Violence Act, जिसमें ये Form 1 दिया है वो फॉर्मेट में ये रिपोर्ट तैयार करेगा and submit the same to magistrate and copies of the same to the police officer in charge of the concerned police station. तो ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कॉपीज देगा रिपोर्ट की। द विक्टिम विल बी असिस्टेड बाय अ प्रोटेक्शन ऑफिसर इन फाइलिंग DIR एंड अ कोर्ट केस। द परपेट्रेटर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और एनी विटनेस टू द क्राइम may submit FIR or complaint to the victim's behalf with the local police officer, the protection officer, service provider to or the magistrate. ये तीनों प्रोटेक्शन ऑफिसर है। डोमेस्टिक वायलेंस इफेक्ट्स इन जनरल विक्टिम ऑफ रिपीटेड वायलेंस, जो महिला डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है उसके दिमाग पे क्या का इफेक्ट हो सकता है ये मैं बताना चाहती हूँ इसमें।
In general, victim of repeated violence experience more serious consequence than victim of one time incidents. एक बार अगर किसी का वायलेंस होता है तो उसी टाइम उसका वो जो दुख दर्द खत्म होगा, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस रिपीटेडली हो रहा है, वो महिला क्या हद से गुजर रही है इसके बारे में बोल सकते हैं कि वुमन विद हिस्ट्री ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आर मोर लाइकली टू डिस्प्ले behaviors that can lead further to health risks such as abuse, alcoholism and suicide attempts. तो ये उसके परिणाम हैं. Section 31 of DV Act. What is the Section 31 of DV Act? A breach of protection order or of an interim protection order by the respondent shall be an offense under this Act and shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or which may extend to 20,000 rupees or both. तो ये Section 31 है. Days to file DV case. The first date of hearing should be within 3 days of filing the complaint in court. Section 12(4) की provision है. The case should be fully closed within 60 days from the first date of hearing. ये Section 12(5). Section 12 Subsection 5 का ये provision है. तो ये quick remedy देगा महिलाओं को within 60 days. First hearing within 3 days. Section 29 ये अपील की प्रोविजन है. हम लोग बाकी के जो सेक्शन है वो दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. विल जस्ट कंटिन्यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेडीज.